let you go. तो हम जा रहे हैं इस बार मुन्नार। रात के 11:30 बजे मुन्नार के लिए निकल रहे हैं। So it was time for a journey to begin to Munnar and हम follow कर रहे थे Bangalore से Salem, Salem से Erode and then Tirupur होके we would go via the Annamalai Tiger Reserve, Chinnar Wildlife Sanctuary, Marayoor to reach Munnar. So that's the route to take. So इसी के साथ हमारी journey की शुरुआत हो चुकी थी and अगले दिन की सुबह जो थी, now check this out, this was the morning view. You're spoiled for views all throughout your journey. कभी आपको hills दिखेंगे, कभी आपको lush green फॉरेस्ट दिखेंगे, कभी आपको विंड मिल्स दिखेंगे एंड टॉप इट अप विद अ वेरी ब्यूटीफुल सनराइज, राइट? सो दैट्स ब्यूटीफुल. सो इसके बाद आता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व. तो यहाँ पे आपको आपकी व्हीकल डिटेल्स देनी है, कहाँ जा रही है ये सब, एंड यू हैव टू पे अ स्मॉल फी ऑफ 50 रुपीज़ एंड यू मेक योर वे थ्रू अन्नामलाई टाइगर रिजर्व. एंड पोस्ट दैट यहाँ पे आपको कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, एयरटेल का तो नहीं था, आई एम नॉट श्योर अबाउट BSNL. देन यू मेक योर वे थ्रू टू चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फाइनली यू एंटर मरायूर, जहाँ से आपको टी एस्टेट्स के व्यूज़ मिलने शुरू हो जाएंगे. एंड वी वर रियली लकी बिकॉज लश ग्रीन टी एस्टेट्स तो थे ही, बट उसके साथ थे ये फ्लावर, आई थिंक इट वाज अ स्प्रिंग एंड ब्लूम सीजन. सो ये जो ट्रीज़ आप देखोगे जिसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स ब्लूम हो रखे थे, दैट मेड द सीनरी रियली ब्यूटीफुल. Jumped off the subway leading nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. Early morning ये नज़ारे देख के हमारा तो दिल खुश हो गया. But how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space, but you pulled me down and wiped away those cloudy thoughts. I could see the sky when you were close to me. I can't. And as you can see, this freshly blooming trees filled with blue colored flower, they made the drive all the more scenic and added a tinge of color to the continuous stretch of green which you see all around. So this was a very lovely experience. Together it's always better. I don't want to be parted. You're making me wholehearted. You're making me wholehearted. I will always. Finally we made our way to the hotel in Munnar, which is called Grand Plaza, located at the center of Munnar, and the views from the hotel were really good. You can see a canal, the tea estates, the rolling mountains all around. The room had a lot of plants, which was beautiful. So they had different kinds of plants, and the bedroom, master bedroom, as you can see, was really big. It had a small sitting area, a nice comfortable bed. It had an attached washroom as well as a balcony, and then there are these giant windows with the views like this, right? So you're just beside a water body with a golf course behind you, and this is how the room looked like, and this is the view which you can get to see from the balcony. So all in all, I would give this place a 5-star just because of the location, and they also upgraded us to a bigger room with a large living room and a spacious bedroom. I must say that Munnar as a town does lack a lot of good food options, so we just ordered pizza. It was not great. Then we went out after taking rest. During the time of the sunset, we went out and explored different tea estates. इसी सुंदर से शॉट के साथ आज का वीडियो और आज का डे यहीं पे ख़त्म होता है. एंड टुमारो मॉर्निंग वी वेक अप एंड वी हेड टुवर्ड्स टॉप स्टेशन एंड वट्टावरा. सो अगले दिन हम सुबह उठ जाते हैं by 6:30 AM एंड by 7 AM वी स्टार्ट टू मेक अ वे टुवर्ड्स Vattavada. रास्ते में पड़ेगा टॉप स्टेशन भी. सो वी चेकड आउट ऑफ आवर होटल एंड मेड अ वे फ्रॉम मुन्नार वाया ऑल दीज ब्यूटिफुल रोड्स. सो ऑन द वे हमको दिखेंगे मटुपेट्टी डैम, कुंदला डैम, टॉप स्टेशन.
So this is your entrance to Mattupetty Dam. So we reached very early morning, so there were no other tourists other than us. The dam was filled with water, and then you come across these beautiful grasslands, Mattupetty grasslands. These are hay areas, designated hay areas, and trespassing is not allowed, but we just took a couple of steps inside just to explore the grasslands. Mattupetty डैम क्रॉस करने के बाद आगे आपको काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे जहां आप रोक के यू कैन जस्ट सोक इन द व्यू. After that, we reached the Yellapetty grasslands. We soaked in some views and made our way towards Yellapetty. हमारे पूरे सफ़र का सबसे सुंदर गांव, इस गांव का नाम है येलापट्टी. आप इसे गूगल करके देखिए और प्लीज़ इसे विज़िट करिए. एज यू कैन सी दिस विलेज वाज रियली ब्यूटीफुल. तो हम पहले इनिशियली रुके जस्ट टू हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव सम टी, कॉफ़ी एंड अ कैरेट केक एंड मैगी. बट देन हमसे रहा नहीं गया, तो हमने वहाँ के आंटी से पूछा कि नीचे तक कैसे जाते हैं, बिकॉज इट वॉज़ लुकिंग वेरी एंटाइसिंग. तो हमने आंटी से पूछा और हम चल दिए नीचे की तरफ ट्रैक करके. सो गांव जो था बहुत ही ब्यूटीफुल था. लश ग्रीन खेत थे, एक छोटी सुंदर सी स्ट्रीम बह रही थी, एंड देन द बेस्ट पार्ट वाज मुझे ऊपर से एक बहुत ही प्यारा सा फुटबॉल फील्ड दिख रहा था. एंड बीइंग अ फुटबॉल फैन, दिस वाज स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रीम. सो वी क्विकली ट्रैक डाउन, क्रॉस दिस स्मॉल स्ट्रीम, एंड रास्ते में शिवानी और उनकी मम्मी को मिले हिसोला के पेड़. सो हिसोला इज अ फ्रूट विच दे फाइंड इट इन गढ़वाल रीजन इन द माउंटेन्स. सो दे वर वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट इट. वी ऑल्सो विजिटेड दिस कैरेट फार्मिंग रीजन. सो आंटियों ने हमें वेलकम किया, हमने देखा कैरेट फार्मिंग कैसे होती है. एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग आई ऑल्सो ट्राइड हिसोला. काफ़ी खट्टी थी, मे बी पकेगी तो थोड़ी मीठी हो जाएगी. एंड देन वी वेंट अबाउट एक्सप्लोरिंग द विलेज. विलेज के खेत एक्सप्लोर किए. फाइनली हम विलेज के सेंटर पे पहुंच के फील्ड पे बैठ के सारे व्यूज़ को ऑब्जर्व किए. एंड वी जस्ट वेंट अबाउट एक्सप्लोरिंग हाउ द विलेज लाइफ इज़, हाउस कैसे है, ये टी फैक्ट्री कैसी है. एंड लुक एट दिस फील्ड, आई मीन ओ माई गॉड, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फुटबॉल फील्ड आई एवर सीन. तो हमने वहाँ ऊपर कार पार्क करी और नीचे ट्रैक करके यहाँ पूरे नीचे तक आए. एंड देन इट वॉज टाइम फॉर अस टू गो अहेड इन आवर जर्नी एंड मेक आवर वे टुवर्ड्स टॉप स्टेशन. वी स्टार्टेड मेकिंग आवर वे टुवर्ड्स टॉप स्टेशन. तो टॉप स्टेशन जो है हाईएस्ट पॉइंट है मुन्नार के आसपास में. देयर इज़ अ व्यू पॉइंट मेड. ऐसे ही नज़ारे दिखेंगे आपको. 20 रुपीज़ की टिकट दे के वॉच टावर से देखना है. आई वुड नॉट रेट इट वेरी हाई बिकॉज काफ़ी भीड़ थी, एंड यू कैन फाइंड दो सीनरीज ऑल अलॉन्ग. उसके बाद हम टॉप स्टेशन क्रॉस करके चले गए वट्टावरा की तरफ. रास्ते में ये शोला पबंदम फॉरेस्ट पड़ता है जो आपको क्रॉस करना पड़ेगा. एंड देन एट द पाजा थोटम जंक्शन यू टेक अ लेफ्ट टू मूव टुवर्ड्स द Vattavada village and the place where we are staying, which is called the only place. रास्ते में आपको चलने के बाद ये साइन बोर्ड दिखेगा जहाँ से आपको ऊपर एक और पहाड़ की तरफ जाना है. द रोड इज़ नॉट वेरी गुड, सो अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, SUVs है, देन दैट वुड मेक योर लाइफ अ लॉट ईजियर. वी डिडंट स्ट्रगल अ लॉट इन आवर कार. वी वर 3 people and luggage for 3, and this is the place where we are staying right now, as you can see. So the first day we are staying in the A-frame cabin, and the next day we'll shift to the log house. सो जो A-frame कैबिन था, क्या बताऊँ, दिस वॉज अ वेरी बिग A-frame कैबिन. और इसके व्यूज़ देखिए. सामने आपको राइट साइड में जो नुकीला पर्वत दिख रहा है वो साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है जिसको कोलुकुमलाई भी कहते हैं. सूर्यनेली से जाते हैं. लेट्स गिव यू अ क्विक टूर ऑफ द A-frame फ्रॉम इनसाइड. सो घुसते ही आपको एक सिटिंग एरिया मिलेगा जहाँ पे 2+2 4-seater सोफाज है, डाइनिंग टेबल्स है, अबेंडेंट स्पेसेस है, फुल्ली इक्विप्ड विथ वाईफाई, केटल्स, अ कॉमन वॉशरूम भी है लेफ्ट साइड में. एंड देन देयर इज अ स्पेस टू स्लीप ऑल्सो फॉर 2 people इन द लिविंग एरिया. ऊपर का जो लॉफ्ट है वो भी फंक्शनल नहीं है. अंकल कह रहे थे कि उसका लैडर फैब्रिकेट होके सऊदी अरब से आ रहा है, सो सून दैट विल बी फंक्शनल टू. सो ऊपर भी लोग रह सकते हैं, राइट. सो ये है वो लिविंग एरिया का स्लीपिंग प्लेस. तो क्वीन साइज मैट्रेस, वेरी कंफर्टेबल मैट्रेस केप्ट देयर, एंड दिस इज द कॉमन वॉशरूम. Again, very neatly done, very
a very sophisticated looking washroom, very good place. Yeah, so all in all brilliantly well done A-frame cabin. इससे पहले हम चिकमगलूर में रुके थे पर वो काफ़ी छोटा था इसके कंपैरिजन में. That was also very good but this was really big. So आते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ. So घुसते ही आपको मिलेगा एक बहुत ही कंफर्टेबल सा बेड, a lot of complimentary water bottles. अंकल ने 10-12 बिस्लरी के बॉटल्स रख दिए थे, a couple of books to read. And then this is the view which you see from your bed. पीछे रिजर्व फॉरेस्ट की व्यू मिलती है. एंड देयर दिस अटैच्ड वॉशरूम जहाँ पे बेसिन है, पूप करने की जगह है. एंड देन देयर इज दिस प्लेस वेयर यू कैन टेक शावर. सो बाहर के वॉशरूम में यू कैन नॉट टेक शावर बट अंदर यू कैन. एंड देन देयर इज गीज़र. इस प्रॉपर्टी में रहते हैं तो बहुत ही प्यारे प्यारे डॉग्स. द डैशिंड इज कॉल्ड पॉपी एंड पॉपी इज़ प्रेगनेंट. सो ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहा था और हमने शाम बिताई इसी सामने के मेडो में बैठ के चांद को आसमान में ऊपर जाते हुए देखा. द बालकनी वॉज प्रटी बिग. हमारे फ्लैट के बालकनी से बड़ा है तो हमने बैठ के वहाँ से सारे नज़ारे देखे और वेट कर रहे थे कि कब इवनिंग हो और हम बॉनफायर करें. सो द फर्स्ट डे वॉज ऑल अबाउट रिलैक्सिंग एंड टेकिंग इन द व्यूज़ एंड एन्जॉइंग द प्रॉपर्टी. इट वॉज very cold. It was almost 8 to 10 degrees at night. So we took full advantage of the bonfire. And tomorrow we will shift to the log house and we'll explore the places around Vattavada. And do watch out for the next video because that log house is really special.